The students, हमेशा खुश रहो बिटियाओं। Myself Vishnu Samotya, Faculty of Education and Methodology, Program DTCS third trimester, session Classification of Polymer and its application. Now we discuss classification of polymers. Polymers are classified in four categories. First are based on organ of source, second based on structure, third based on molecular forces, and fourth are based on mode of the polymerization. First discuss are based on organ of source. Based on organ of source or polymer are further classified in three categories: natural polymers, semi-synthetic, and synthetic polymers. Now we discuss based on organ of polymers. First, natural polymers. Polymers which are isolated form natural material are called natural polymers. For examples, cotton, steel, wood, and rubber. Next, synthetic polymers. Synthetic polymers which are synthesized from low molecular weight compounds are called synthetic polymer. For example, polyethylene, nylon, and terylene. Next are semi-synthetic polymers. The polymers are mostly divided for naturally occurring polymers by chemical modification. For example, rayon are known as semi-synthetic polymers. Second are based on structure. Based on structure polymer are further classified in four categories. First, linear polymer, branch polymer, cross-linked polymer, and network polymer. First discussion are linear polymer. Linear polymer molecules form long chain without branch, no hydrogen bonding, so are known as linear polymers. Branched polymers molecules having branch point that connected three or more segments, and cross-linked polymers it included interconnected connections between chains are known as cross-linked polymers. And network polymers, a cross-linked polymers that include numbers interconnection between chains are known as network polymers. In this structure are given below. First are linear polymers, second are branched polymer, and thirds are cross-linked polymer in more than 3 units, 6 segments, and network polymers. Clear? Next classifications are based on mode of the polymerization. Based on mode of the polymerization are first additional polymerization. Some kinds of monomers are stand forwardly added. It is repeat chain reactions having chemically activated mers. Each reaction set up the condition for another to proceed. It consists of three stages: initiation step, initiation steps, and propagation state and termination step. Initiation step are birth, growth, and death. So initiation, propagation, and termination steps are based on mode of the polymerizations. Clear? Next, condensation polymerization. It involves the polymerization reaction between two monomers with two completion of sample of the product. A and B convert to AB plus sample by the product. It involves individual chemical reaction between reactive mers. By product is formed and condensation out. Conducted out. The reaction is slower and additional of the polymerization. Need reactive for the of a functional group. Next, characteristics of polymers. The characteristics of polymers are lower density and lower coefficient of fraction, good corrosion resistance, and good ability, poor tensile strength, lower mechanical properties, poor temperature resistance. Clear? Next, applications of polymers. Polymers are used medicine, consumer science, and industry and sports. First, medicine. Medicine many biomaterials, heart value,
replacement and blood and made up of the polymers like Dacon and Teflon. Consumer service, plastic contains plastic containers of all shapes and size are lightweight and economically less expensive than more traditional consistence. And industry polymers are automobiles part, tankers, packing materials are known as all polymers. Applications used are industrial market and sport and golf club pools are product of the polymers and sports uses. क्लियर। तो ये होता है अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर एंड एप्लीकेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर्स। तो अपन क्लासिफिकेशन में कितने पढ़े, चार टाइप्स। चार टाइप में अपन ने पढ़ा सबसे पहले बेस्ड ऑन द ऑर्गन ऑफ सोर्स, और बेस्ड ऑफ ऑर्गन सोर्स में अपन ने पढ़ा नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचुरल से अपन को प्राप्त होते हैं, सेमी सिंथेटाइज जो अपन को सेमी सिंथेटाइज, एंड लास्ट अपने सिंथेटाइज पॉलीमर। सिंथेटाइज पॉलीमर से अपन जैसे लोअर मोलिक्यूल से अपन को जो जो प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं अपन सिंथेटाइज पॉलीमर। और सेमी सिंथेटाइज पॉलीमर्स में अपन को जो पॉलीमर मोस्टली डिवाइडेड फॉर द नेचुरल अकरिंग, मतलब नेचुरल से अपन को जो पॉलीमर प्राप्त होते हैं उसको अपन केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसको बोल देते हैं सेमी सिंथेटाइज पॉलीमर्स। उसके बाद में अपन ने पढ़ा बेस्ड ऑन नेचर, नेचर के स्ट्रक्चर के आधार पर अपन ने देखा कि स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर होते हैं लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर एंड क्रॉस लिंकेड पॉलीमर। क्लियर। और लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंकेड पॉलीमर की अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी भाई। जो लीनियर स्ट्रक्चर होगी वो लीनियर, और यदि थ्री बीम्स में आपको थ्री बॉन्ड्स में अपन को पास कोई ब्रांच मिलती है तो उसको बोलती है ब्रांच। और यदि मोर देन अपन पास हायर ब्रांच हो जाती है तो हो जाएगी क्रॉस लिंकेड या नेटवर्क पॉलीमर्स। उसके बाद में अपन ने पढ़ा बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस जिसमें अपन ने फाइबर, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोस्टेटिक्स पॉलीमर्स एंड इलास्टिक्स पॉलीमर, इलास्टिक्स मर्स अपन ने ये सब कुछ बेस्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द पॉलीमर्स में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा बेस्ड ऑन मोड ऑफ द पॉलीमराइजेशन, बेस्ट मोड ऑफ द एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। अपने फर्स्ट दो यूनिट मोनोमर्स यूनिट को एडिशन करके अपन ने एक पॉलीमर्स बनाया, और उसके बाद में सेकंड में अपन ने बनाया टू कंडेंसेशन, टू मोनोमर्स यूनिट को कंडक्ट करके अपने एक पॉलीमर्स का प्रोडक्ट फॉर्मेशन किया। तो ये हो गया अपने पास टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। एंड एप्लीकेशन में अपन इसका यूज़ लेते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ लेते हैं, स्पोर्ट्स में यूज़ लेते हैं, मेडिसिन में इसका यूज़ लिया जाता है। क्लियर। ओके, थैंक यू।